Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to Scholars Hive. Friends, today I'm going to present a short story which is included in LLB Part 2 English Paper 1 by Lenium. This story is written by J.G. Ballard, James Graham Ballard. He is a well-known British writer of science fiction in which he describes a dystopian world. फ्रेंड्स, जेम्स ग्राहम बलाट ने बाइलिनियम एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ लिखी। ये एक साइंस फिक्शन है जिसमें उन्होंने ओवर पॉपुलेशन पर क्रिटिसिज्म किया। कहानी की अगर हम बात करें तो इसमें दो ही मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि क्लोज फ्रेंड्स हैं, जॉन वार्ड एंड हेनरी रॉस्टर। उन दोनों की दो गर्ल फ्रेंड्स हैं जो अपनी फैमिलीज के साथ उनके घर में शिफ्ट होती हैं। फ्रेंड्स, इस कहानी में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि दोनों को लैंडलॉर्ड्स पसंद नहीं थे क्योंकि लैंडलॉर्ड्स सिटी काउंसिल के मुताबिक चल रहे थे और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बिल्डिंग्स में ऐड करना चाह रहे थे। जबकि आयरनी ऑफ फेट देखें कि जॉन वार्ड और हेनरी रॉस्टर एट द एंड ऑफ द स्टोरी खुद लैंडलॉर्ड की तरह सोचते हैं और मैक्सिमम लोगों को अपने उस छोटे से घर में पनाह देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकें। प्लॉट ऑफ द स्टोरी: The story is set in the distant future. That is why it is called a futuristic story, where the writer has depicted the danger which the human race would face. Millennium is a reflection of dystopian world that is smudged both by overpopulation and chaos. In this story, nearly 20 million people are squashed into a city, putting pressure on space. The city council has restricted the space that an individual can occupy. In this story, Ward and Roster are close friends who share living space. They are employed but find it hard to live in the crowded city where pedestrian traffic jams can last for days. John Ward lived in a cubicle, its plywood walls flexed and cracked with every footstep. Over 100 people lived in the top 3 floors of the old rooming house. Ward and Roster buy a Victorian wardrobe, which is the only thing of beauty in their drab living area. They discover a hidden room. They become greedy of the extra space and plan to get maximum benefit. Later, Roster wants to invite their girlfriends to share this space. The girls bring in their families too. Ward and Roster has spies the greedy landlords who provide tiny cubicles to their tenants. फ्रेंड्स, अगर हम टाइटल की बात करें यानी रेलिवेंस ऑफ द टाइटल, J.G. Ballard ने मिजरेबल लाइफ का जिक्र किया है। This story describes a situation when the population of the world has grown to the extent there is no place for people to live normal lives. This story refers to the time far into future when overpopulation is the threat. Millennium may refer to second millennium, the second period of 1000 years in the Common Era. Millennium is a new word which means 1 billion years. Symbols: Ward is beauty lover. He is like a Victorian man of letters. He is more disturbed when the Victorian wardrobe is destroyed to make more space. Raster is not sensitive to beauty and sacrifices the one thing that symbolizes beauty in their lives, the Victorian wardrobe. The discovery of the secret room symbolizes hope and freedom. They are looking for more space, but instead of having space, they fill the bedroom with Victorian furniture. That symbolizes overpopulation. Themes of this story: we have the themes of overpopulation, power and loss of privacy, corruption, freedom, and acceptance. Overpopulation has shrunk the space. The population of the world has been increased.
It is affected on both the way of life and quality of life of the inhabitants. People have to live in room of 3.5 or 4 square meters. Historical buildings have been taken down to make new homes. City streets are narrow and overcrowded. Most of the population of the world is devoted for cultivation. Cities and rural areas are specified to produce food so that the increasing population may not have to face food shortage. Loss of privacy. It is another theme of the story. People have to live in cabin like cells. They will have no proper and sufficient place to live in. They will lose their freedom of living alone. They will have to live with many other roommates. So they have lost their privacy. This is really alarming for the population that government has decided to minimize the size of place for a person to 3.5 meter in future. The main characters of the story, John Ward and Henry Roster, want to get rid of such situation. They try to find a separate place to live in. They succeed in finding such a place, but soon their privacy is affected. They invite their old pals or girlfriends who shifted with their families. This ends private life of Ward and Henry. Power is the most striking theme of the story. When John Ward and Henry Roster get extra space, they feel themselves powerful. They become authority. They invite others to live with them. They have power to allow or to get go other from their place. Ward and Roster turn into landlords. It is also a tool to make money. दोनों दोस्तों की नेचर एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है, दोनों के इंटरेस्ट और टैलेंट्स एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। जॉन वार्ड एक विक्टोरियन मैन ऑफ लेटर्स यानी एक ऐसे इंसान है जो विक्टोरियन इरा में पढ़े लिखे सुलझे हुए लोगों के लिए ये एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया जाता था, विक्टोरियन मैन ऑफ लेटर्स का। तो जॉन वार्ड बिल्कुल उसी टाइप के इंसान थे जो कि बाय प्रोफेशन एक लाइब्रेरियन भी थे, जबकि रॉस्टर सेंसिटिव नहीं थे और ना ही वो ब्यूटी लवर थे, इसीलिए वो जॉन वार्ड को कायल करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो अपने घर में बुलाएंगे तो इससे उनके पास पैसा ज़्यादा होगा। फ्रेंड्स, इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ तब आता है जब जॉन वार्ड और हेनरी रॉस्टर को उनके इस छोटे से घर में एक सीक्रेट रूम मिलता है और ये सीक्रेट रूम बेसिकली अलामत है उम्मीद और आज़ादी की। John Ward is the main character and protagonist of the story. He lives in a narrow room. He is a middle-aged person. He is a librarian by profession. He loves historical buildings. He is not an active person. He hates landlords of his city who have changed living rooms into cubicles just to earn more money, but he becomes a landlord himself when he finds the empty room. He loves freedom and privacy. He wants to enjoy a private life. He tries to find a separate place to live where nobody can disturb him. For that purpose, he is scanned classified ads in the newspaper. He succeeds in acquiring an accommodation. Henry Roster, he is a government servant. He is a close friend of Ward and shares the living space with him. He is an active person. He has convincing power. He dominates Ward in making decisions to bring their friends to their newly acquired place to live in. Roster is very different from Ward. He is more aggressive in his approach. He is not a beauty lover. He is a very realist and intelligent person. He finds a spacious place to live, but he spoils the fruit of enjoy by bringing friends and their families there. He says, "My room is driving me crazy." फ्रेंड्स, जे.जी. बलार्ड ने ओवरपॉपुलेशन और chaos, हद से ज़्यादा बढ़ती हुई आबादी और इंतशार को बहुत ही थ्रेट यानी ख़तरनाक चीज़ करार दिया दुनिया के लिए। उनके ख्याल से मुस्तकबिल करीब में आबादी ज़्यादा होने की वजह से लोगों के रिसोर्सेज कम हो जाएंगे और लोगों के पास रहने के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं होगी, प्रॉपर घर नहीं होंगे।
वो छोटे-छोटे घरों में रहने पर मजबूर होंगे जिसकी वजह से उनकी प्राइवेसी मुतासर होगी। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो बिग सिटीज़ में जो लाइफ लोग गुज़ार रहे हैं उसमें हमें इस किस्म की सूरत-ए-हाल नज़र आती है जहाँ पर के लोग छोटे-छोटे घरों में एक पोर्शन को या आधे पोर्शन को मुख्तस कर देते हैं उन लोगों के लिए जो दूसरे शहरों में जॉब के लिए जाते हैं या स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं। बेसिकली जेम्स ग्राहम बलार्ड हम इंसानों को एक वार्निंग देना चाहते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये एक इंतहाई डिस्टोपियन वर्ल्ड है। डिस्टोपियन वर्ल्ड मीन्स मिजरेबल लाइफ, यानी एक ऐसी ज़िंदगी जो काबिल रहम है। जब इंसान दूसरों पर डिपेंड करता है तो उसकी ज़िंदगी काबिल रहम बन जाती है क्योंकि वो अपनी छोटी-छोटी ज़रूरियात के लिए दूसरे लोगों से अपने टर्न का, अपनी बारी का इंतज़ार करता है। रूम्स छोटे हैं तो वहाँ पर रहने वाले लोग ज़्यादा हैं, मैक्सिमम लोग एक ही वॉशरूम यूज़ करते हैं और उनके पास एक ही किचन होता है, बारी-बारी लोगों ने अपने लिए उसको इस्तेमाल करना होता है। So we can say this is a very thought-provoking and remarkable story in the world of English literature. I hope you like it. Thanks for watching.